Hello everyone, a very good morning to all of you. First of all, I would like to take the opportunity to thank all my viewers, all my YouTube viewers for bringing me to the stepping stone to success for the vast 1K family members. Thank you so much, my dear friends. Keep your love, support and keep me increasing, keep me growing. So my dear friends, before I begin, those who are new to my channel, please do not forget to ring the bell to get the new notifications of my upcoming videos. So today's video is on Spoken English class day 1 and I am Hazel and you are watching English Wali Joseph ma'am. So without wasting any time, let us begin our class. So today's topic is very important, my dear friends. Do not skip the video. Stay till the end. Keep watching, and if you skip the video, you'll not be able to understand anything. So stay till the end. Keep watching my videos, right? So today the basic that I'm going to tell you is about the basic English. Now basic English, when I speak about basic English, when we need to learn English, the most important thing what we need to know is the base. जब कभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन के होते हैं, नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? वी डोंट जस्ट गो अप टू बिग वर्ड्स, कैट मैट बैट, नो, वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस. उनके जो बेस को मजबूत, अगर बच्चे के बेस मजबूत होंगे तो वो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे इंग्लिश, राइट? सो टुडेज वीडियो इज़ फॉर ऑल दी एज ग्रुप्स. यहाँ पे कोई भी एज बैरियर नहीं है. सब जितने भी बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, सब इस वीडियो को देखें और उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. सो बेस की जब बात करते हैं, इंग्लिश बेस, आई मीन टू से द रूट ऑफ इंग्लिश, राइट? रूट ऑफ इंग्लिश. This is very important in speaking English. When we do conversation, my dear friend, it's very important. So here today I'm going to tell you 4 most important things when you need to speak English, right? When you are making your base strong. So the first point is, the first one is L, right? The first one is L. Then is, the second one is R, the third one is W, and the fourth one is S. Now you will think that what is LRWS? Yes, my dear friend, these are the most golden things, the golden point that you should know when you begin speaking your English, especially to small children. ये मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टार्टिंग से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत है. और जो बिल्कुल नहीं जानते, जो जैसे मैं कह सकती हूँ जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और इसको आगे के लिए कर पाएंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट वन, व्हेन आई टॉक अबाउट एल, एल इज़ फॉर लिसनिंग. listening means सुनना. So when you are speaking, when you want to learn English, अब आप इंग्लिश के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपको, जैसे आप लोग ने मुझे इतने 1K तक पहुंचाया, इसका मतलब आप लोग मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं. सो आई एम योर फ़ैन. मैं आपकी बहुत अच्छी प्रिय दोस्त बन चुकी हूँ. इन द सेम वे यू नीड टू बिकम फ्रेंड्स विथ इंग्लिश. So for that you need to listen. If you're listening to some story, you have to listen to that particular word. जो भी आप words को सुनना चाहते हैं, words को, जैसे मान लीजिए sitting कैसे बोलेंगे? sitting, coming, going, hi, hello, right? These are the words. So अगर आप जैसे सुनना चाहते हैं तो उसको बहुत बारीकी से सुनना होगा आपको. Then the next one is R. R stands for reading. This is also the second important part in English, reading, right? Reading. Now reading is also, it plays a very important role in English. You need to at least give 5 minutes. I don't say 10, I'm not saying 10 minutes, at least 5 minutes to do these things.
इफ़ यू प्रैक्टिस, इफ़ यू मेक इट इन टू अ प्रैक्टिस, जैसे रोज़ हम सुबह उठ के क्या करते हैं, व्हाट वी डू व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वी ब्रश आवर टीथ बिकॉज दैट इज़ इन आवर रूटीन। वो हम लोगों के एक दिनचर्या में इंक्लूडेड है कि हम लोगों को ब्रश करना है, नहाना है, वी हैव टू हैव अ बाथ, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ, right? We have to wear clothes. So these are the most important things in our life in a day to day. In the same way, reading also plays a very important part in English. So you need to read words. Take up a story book, चाहे वो छोटे क्लास की बुक्स हो। पहले तो आप जैसे आप बिगनर है, अगर आप पहले स्टेज से आपको कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो है, तो हीरो कौन बनाएगा आपको? इंग्लिश वाली जोसेफ मैम। सो आपको उसमें क्या करना है, आपको बस टिक अप अ बुक, ओके, पिक अप अ बुक, start reading small stories. So reading plays a very important part. Read those words and then you underline those words and try to speak in front of the mirror. एक मिरर के सामने अगर आपको हेजिटेशन होता है, आपको शर्म आती है कि आप किसी के सामने बोलेंगे, आपको शर्म, लोग मजाक उड़ाएंगे, सो बेटर टू कम इन टू द फोर वॉल। एक चार दीवारों में आपसे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आप एक शीशे के सामने खड़े हो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक अप दोज वर्ड, यू विल गेट कॉन्फिडेंट, right? So reading plays a very important part. Next we come to writing. W is for writing. Writing is the third important part, my dear friends, but the most is these two. When you know these two, you will be able to write down things very easy. Now suppose you are going to the basic, मैं basic की जो बात कर रही हूँ वो छोटे बच्चों की। For example, अगर बच्चों को A पता है ना, बच्चे ने A देखा, बोला A apple, बॉल, बॉल, अगर उस बच्चे ने बॉल को समझा है, बॉल का पिक्चर उसके दिमाग में, बी का दिमाग उसके माइंड में है कि बी है, देन ही विल बी एबल टू राइट दैट डाउन, राइट? सो इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट, अगर हमने एक पिक्चर दिखा दिया बच्चे को स्पेलिंग, अगर जैसे मान लो जो टू लेटर वर्ड्स लर्न करना है बच्चे को, और हमने बोला उसको एट, तो राइट अवे अगर उसने वो रीड किया उस वर्ड को, एट, इफ इज रेड दैट वर्ड एंड दैट वर्ड इज इन हिज माइंड, इन इफ ही क्लोजेज हिज आइज, अगर वो अपने आंखों को भी बंद करके वो लिख देगा एट। सो राइटिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू लर्न, if you are listening to the words, you are reading the word, you will be able to write things very easy. You will be able to write a name. हम उन लोगों की बातें, उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जिनका हिंदी, जो इनका जो इंग्लिश है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, ज़ीरो पे, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ. अगर आप ये चीज़ें, ये तीन चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करेंगे, एवरी डे यू इंक्लूड इट इन योर लाइफ, सो यू विल बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर. देन द last one is speaking. As I told you earlier, when you do these three, you will be able to do this. आप एक efficient, एक brilliant, and you will be a speaker, brilliant speaker in English if you do these these four things in your day-to-day life. Speaking, when you listen to these, you will speak up, right? And then you will be able to speak. Reading करेंगे, सुनेंगे तो words को आप बोलना start कर देंगे. You will be able to speak up. Come, go, and when you say these words like small 2-letter word, 3-letter word, बच्चों को ऐसे तो हम लोग पढ़ाते हैं first letter, पहले तो first 1 letter, फिर 2 letters include करेंगे, फिर 3 letters, फिर उनसे बनेगा sentence, उनसे फिर वो words को बोलना सीखेंगे. A bag, a book, अ गर्ल, राइट. सो बेसिक है ये चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों. अगर अपने बच्चे को अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है और आप अपने बच्चों को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा. और आप जब फॉलो करेंगे, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, आप खुद एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इंग्लिश में. सो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू. नाउ यू शुड नो, जब रूट की बात करते हैं तो उसका जड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें क्या चीज़ें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें क्या है, अपने अल्फ़ाबेट्स. नाउ यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ अस, हम 100% की बात कर, 100% लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं. नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी. सो दे आर 26 अल्फ़ाबेट्स. हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स? 26 अल्फ़ाबेट्स. And there are 5 vowels. My dear friends, I want to tell you, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड है,
इसको हम vowels नहीं पढ़ेंगे. It is completely, totally wrong. It is not vowels, right? It is vowels. It is vowels. Why? Because यहाँ पे O जो है silent है, right? Vowels, vowels, vowels. ओके वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियो पे. सो दे आर 26 अल्फ़ाबेट्स एंड 5 vowels, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्फ़ाबेट्स, व्हाट आर द अल्फ़ाबेट्स? नाउ यू नो ABCD, हम लोग सबने पढ़ा ABCD, राइट. सो नाउ हियर आई विल टेल यू. नाउ व्हेन आई एम सेइंग अबाउट 26 alphabets, 26 alphabets, and here I am saying 5 vowels. So 5 vowels यहीं से निकला है, इन 26 alphabets से ही 5 निकले हैं. Now I am going to tell you like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Right? Now, can you see these 26 alphabets over here? All 26 alphabets, right? Now, from these alphabets, there are 26 alphabets and 5 vowels. Now, can you see these vowels? A, E, I, O, U. These are 5 vowels. Now, when I said 26 alphabets, उसमें से मैंने 5 जो है क्या है? Vowels है. These are called, these are vowels and these are, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये है क्या, ठीक है. Now 26, first let me tell you 26 alphabets, 5 vowels. Now I have written here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now from this I have circled, can you see this red? These are what? Vowels, right? Now when we remove 26 by 5, 26 को 5 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21. Now they are, after this they are 21. After circling the vowels, vowels को circle करने के बाद कितना बचता है? 21 consonants. C, O, N, S, O, N, A, N, T, S. Consonants and 5 vowels. I hope it's very clear to you. Now, my dear friends, I want to give you two words. I want to give you 2 words. 2 words ऐसे 2 words हैं जो केवल उसमें vowels आते हैं. 2 ऐसे शब्द हैं जिसमें vowels पूरे 5 स्वर आते हैं, right? So the first word is education. The first word is education. The second word is eunoia. The second word is eunoia. Now the first word, can you see the first word? In this first word, there are all the 5 vowels. In this first word, there are 5 vowels. Now what are they? Come on, tell me. E, A, I, O and U. This is the word education, and in education all the 5 vowels are included. Now the second one is eunoia. You know eunoia, you must be hearing this word first. आप पहली बार इस word को शायद सुन रहे हो और सुन भी चुके हो. This is the second word eunoia. It means, it is a Greek word. ये एक Greek word है and this means a beautiful mind. A beautiful, in another word you can say a beautiful mind or a healthy body. And another meaning of this is it's a tree that is grown in the African countries. So you can find out more about eunoia. Now here see I, O and U. These are the vowels, right? These are the 2 words in which all the 5 vowels are included. Now my dear friends, now you will tell me, you
message me and tell me, is there any word which has all the 5 vowels in it? Please come on, do message me quickly. I want your reply. मुझे reply चाहिए आपका. So I want to know, is there any other words including these 2 words that have all the 5 vowels in it? कोई ऐसे और भी शब्द है जो आप मुझे बता सकते हैं जिसमें पूरे 5 vowels, right? So please come on, quickly do message me and let me know I want to know the words, any other words which have all the 5 vowels, right? Now I hope this is very clear to you, and if you want, you can please do message me so that I can also send you a PDF of this. It will be very helpful for you. So let us move on to the next now. There are some more important things that I would like to tell you. The first important part was this, that you should know the 4 important parts: listening, reading, writing and speaking, right? Then we had, I told you about the 26 alphabets that we have in English, and in that 26 alphabets there are 5 vowels. Now when we talk about the alphabet, the letters here in this A to Z, in A to Z letters, there are these 5 vowels: A, E, I, O, U, right? Now when we remove these A, E, I, O, U, how many alphabets are left from these 26 letters, from these 5 vowels? When we remove these 5, how many are left? 21. Now they are called consonants, right? And these 5 are vowels. A, E, I, O, U are vowels. This B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are all 21 consonants. So I hope this is very clear to you, and now I hope you have written this down. And if you have not written, don't worry, nothing to worry. Please do message me. I will send you the PDF of this whole work, right? Now moving on to the next part. Now we go to the next part, which is the important also. So let us go to the next part and I will tell you the next part now. Now my dear friends, as I told you in the previous video, the starting video, there are 26 letters. There are 26 letters, right? And they are divided into 26 letters, right? 26 letters. Now these 26 letters, I told you in my beginning, in the starting video, they are 21 consonants, right? (21) consonants and 5 vowels. 21 consonants and 5 vowels. Now we go step by step to teach children, right? Now the same way, the same method includes for the younger people, for younger to older. बड़े से लेके छोटे तक यही मेथड आपको यूज़ करना है, और आपको पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, राइट? इट्स वेरी इजी मेथड. नाउ यू सी 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 vowels. वी गो स्टेप बाय स्टेप. अब छोटे बच्चों को फ्रॉम द LKG में, LKG की बात करें तो उनको पढ़ाते हैं तो सीधा उनको 2 letters सेंटेंसेस तो बनाना नहीं सिखाते. वी गो फ्रॉम स्टेप बाय 1, 2 and 3 step by step. So the first step that we take to teach learners is from A to Z, right? The alphabets, पहले तो उनको alphabet सिखाते हैं. So first is letters. Letter. We talk about letter. Letter की बात करते हैं तो one single letter, right? So one single letter, how we teach them? A for E, D, and so on. And it continues. A for apple, B for ball, C for cat, and so on, right? These are one single letter that we teach the children. In the same way, the same method is applicable for the youngers, right? And the elders. Now the second step is, like जैसे बच्चे जब LKG में होते हैं तो हम लोग उनको क्या सिखाते हैं? ABCD, राइट? तो वो पहला मेथड हो गया, एक एक अक्षर सिखाते हैं. बेटा A लिखो, A बोलो, A for apple, B बोलो, B for ball, राइट? Then when they come to another step, जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो वो ABC है, राइट? जब दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, second step is
letters. The second step is letters. Now what are the letters? अब letters यहाँ पे देखो, letter मैंने लिखा, letter मतलब एक, one single word, right? Letter means one single alphabet. Now here I am talking about letters, it means more than one, right? Now we tell them like at, A-T, at. It is made from these 26, this 21 alphabets, right? 26 alphabets है, उसी में से कहीं भी हम लोग जो बनाते हैं A-T, at, B-T, but, like for example A-T, at, A-N, an, right? I-N, in. Now see, A-I-N, in, sorry. A-T, at, I-N, in. I-T, it. Now see, these are the two letter words now. They are two letter words. This is going by step. First we learned ABC, then we learned two letter words. And then after these two letter words, we come to the third step. That is sentence. Sentence. Now from where these words are coming? From these alphabet that I'm going to write it down, my dear friends, again. Now come on, if you are there, please repeat after me. A, and then we go B, and then C, D, E, F, G, H. It's not H. This is a very common mistake that most of you do this. This is not H, it is H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Alphabets. Got it? These are the 26 alphabets. Now see, first we taught children what did you learn? First you learned ABC. You learned A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, right? Then we taught you all, then we taught the children. तब हमने बच्चों को क्या सिखाया उसके बाद? Two letter words. Second one is letters. Letters means there are more than two. Now at. Now A, and where is T? T. A, T becomes at. Right, then in, I, N becomes in. These are two letter word. Letters बोल रहे, ध्यान सुनिए. Letters means एक से ज़्यादा है. Then we talk about sentences. Now what are the sentences? Sentences are, these are the words that we take from here. That is from A to Z, right? A to Z के अंदर ही हम लोग words बनाते, चाहे वो जितने भी बड़े words हो, as much as big. We take it from these 26 alphabets. Is it clear? इन्हीं A to Z के बीच से ही पूरे words बनते हैं. Now for example, CAT, cat, कहाँ से बना? C, A, and then we go to T. Cat. C, A, T, cat. Right? यहाँ से बना. और कोई भी word, जितने भी words हैं, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक words that we learn, from small to big words, they are all taken from these alphabets only, not out of any alphabet, not out of those alphabets, because A से Z तक उसके आगे कुछ और है ही नहीं. अब सोचिए 26 हमने बताया आपको, there are 26 alphabets, उसमें से आप वर्ड्स को हटा दीजिए 21, लेकिन हम टोटल आपको बता रहे हैं 26 जो अल्फ़ाबेट्स है, इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स में से सोचिए कितने बड़े बड़े वर्ड्स बनते हैं. There are big sentences that we speak. The speakers speak the big sentences. They are all taken from these single words and they join together. Then they make words, and when these two words join together, more, right? A bag. Now, let's see a sentence. It's making a sense. A bag. This is the third last important step in learning the basic English. We come till the last one is a bag. Then बच्चा बोलता a bag. The next, a cup. A cup.
then they come to know, okay, then these are the sentences that they try to learn, they try to write through these steps, right? So these are the steps, especially if the teachers are watching me, अगर मुझे teachers भी देख रहे हैं तो please follow these steps. इस स्टेप्स को फॉलो करिए और अपने क्लास के बच्चों को सिखाइए ताकि वो और फ्लुएंट बन सके इस इंग्लिश में, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स माय डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट वी वेंट टू लेटर्स पढ़ाया उनको, ए टू जी लेटर्स वी टॉट देम. देन वी वेंट टू लेटर्स, मेकिंग one letters together to become two letter words, add in it many letters. Then we taught them how to make sentences. We give them, right, we wrote a bag. Now this full bag, children will not be able to learn these letters. We make them letters, we make them write. Now for example, we give them A, G. These are the words, isko vowels, that you say vowels. First we teach them these, then we make them add those words. Add, now what word will become, B. If you add B, it will become bag. So these are the ways that we teach them, and this is the most easiest way. I hope you are clear with it, you have understood it. And if you have understood, please do comment me, like and share my videos. Keep watching me, English Wali Joseph ma'am. Thank you.